मैं जैसे कि आप हैदराबादी लोग देख हिंदी के रहे हैं हिसाब से बात अक्षय करता हूँ, कुमार बट स्टेज पे है, द मधु वे ही काफी सेज सालों द वे बाद ही बोला, टॉक्स, कांटों ही के इज बीच जलवा दिखाने कंप्लीटली अ के बाद एक जेन्युइन साथ मैन, फिर से ही इज अ ऐलान जेन्युइन जंग प्रोड्यूसर, छोड़ ही इज दिया अ है जेन्युइन अक्षय एक्टर, कुमार के साथ। and अक्षय that is कुमार what फिर से leads it स्ट्रिप रूप forward. के अवतार में Then आ रहा after है that I उन्होंने। didn't have to इससे ask पहले ओ him the माय whole गॉड में भी script or कृष्ण के रूप anything, में धारण I किया, just उसके went बाद with फिर the से flow, उन्होंने and that's it, and that's how we शिव came के into रूप the धारा I था। came into the और film. That's उनका it. पिछले Thank you so पिक्चर much, अगर sir, for राम sharing all लखन of जिसमें that. राम की खोज में I निकली know थी, you have a lot अभी of फिर से questions, so धमाल we'll quickly मचाने get the आ रहा chairs. है And साउथ के Okay, सुपरस्टार the chair. प्रभास के साथ। क्या उनको फिर से उसी में प्यार चले वही जाएंगे। मिलेगा जो ठीक है, लास्ट जैसा टाइम मिला था आपको? Okay, so where we अक्षय getting the कुमार first बहुत question भावुक from? है, आइए। गंभीर भक्ति भाव वाला देखा इंसान जी? है, लोगों को दिल में उतर जाता है, हर काम दिल से करता है। Also, आगे मधु हम मैम जानते प्लीज हैं कि आइए। अक्षय मधु कुमार बालाजी क्या के लिए बोला जोरदार है। तालियां। As I said, एक्शन ओरिएंटेड अवतार में एंड मुझे आज इतनी खुशी हुई है कि मैं मधु जी से मिला हूँ। मैंने एक फिल्म इनके साथ की थी, शी प्लेड माय लीड रोल विद मी, अ फिल्म कॉल्ड ऐलान। आई नो आई डिडंट फॉरगेट इट, सो आई ओनली रिमाइंडेड यू आउटसाइड। जालिम भी की थी। सो आई एम टुडे वेरी वेरी हैप्पी। आई एम मीटिंग हर आफ्टर आई थिंक 20 years or something. I'm seeing you, but you haven't changed at all. You look the same. And I told her also, ऐसा लगता है बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, ऐसा लगता है रात को फ्रिज में जाके सो जाती है। नमस्कार, थैंक यू सो मच, इतना प्यार एंड सो मच अप्रिसिएशन। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे लोग याद रखते हैं, और आप स्पेशली मीडिया मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल। मैंने कम से कम 10 से 15 साल तक मैंने बिल्कुल काम नहीं किया, और मैं अपने आप को इस इंडस्ट्री से मैंने दूर रखा। इसके बावजूद जो मुझे आप लोग याद रखते हो, प्यार देते हो, मैं बस सिर्फ आई एम ओनली हम्बल एंड आई फील ग्रेटफुल। और ग्रैटिट्यूड की अगर बात करें तो आप विष्णु जी को सुने, और ही इज सो हम्बल, एंड ऑफ कोर्स अक्षय, दे आर ऑल नोन फॉर देयर ह्यूमिलिटी। हम सारे जब इस फिल्म इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, पिक्चर की बात बाद में करते हैं, हम एक दूसरे की पर्सनालिटी, कैरेक्टर, स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, एंड दे हैव अर्नड इट. So I also feel very grateful for the same reason that I must have done something good in my life to be here today before all of you. And second of all, अगर मैं ये कहूँ कि this movie is very special for me, to be a part of this stage, दोबारा आने के बाद, आप जानते हैं कि मैंने पिछले कुछ सालों से आई एम वर्किंग अगेन, और मैं आपको मिलते आती हूँ अलग अलग फिल्मों के साथ या सीरीज़ के साथ। हर बार मुझे ये फीलिंग आती है कि आई एम सो लकी टू बिलोंग हियर, टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फ्रेटर्निटी। सो आई थैंक एवरीबडी, मुकेश जी द डायरेक्टर, फॉर गिविंग मी दिस। मैंने ये कहा कि यहाँ एक्शन हीरोज़ के बीच में मैं खड़ी हूँ, प्रभास, अक्षय एंड विष्णु, और मैंने भी तलवार लेके मैंने भी कुछ ऐसे 2-4 शॉट किए हैं। आई होप कि आप मुझे उस रूप में देखें एंड यू अप्रिशिएट मी, बिकॉज आई रियली फेल्ट कि जैसे आई एम द एक्शन क्वीन. I felt like that. So thank you so much for giving me this role, Vishnu, and he's a great producer. हर बार आप सुनते होंगे ना, कहते हैं ना कि ये फिल्म ऐसे नहीं लगा कि मैं शूटिंग कर रही हूँ या काम कर रही हूँ, जैसे लगता है पिकनिक। और ये वाकई मेरे लिए पिकनिक था, क्योंकि न्यूजीलैंड में थे और मैंने स्काई डाइविंग भी की अपने को एक्टर के साथ, और फिर मोहन सर के घर में जाके घर का खाना खाते थे. It was everybody was playing, and Vishnu really looked after us. कभी भी एक दिन भी ऐसे, और मैं अपने घर से 10 दिन से बाहर. Written even there, even today, when you go to one of the Jyotirlingas in Hyderabad, near Hyderabad, Sri Salem, it is written there. Long before that, the Vayulinga is there. That's the only linga which is, the base is in the shape of a spider, the sides are of elephant tusks, and on the top is a snake. This is the shape of Vayulinga. Kannappa is a devotee of Shiva in that area. And after 8th century, in the 14th century, one of the greatest kings of India, Sri Krishna Devaraya, in his kingdom, there was this very famous poet called Durjeti. Durjeti wrote poems on Sri Kalahasti Ishvara Mahatyam, which means all the miracles of Sri Kalahasti Ishvara, this temple where the Vayulinga is Sri Kalahasti. And those poems
they were written in these, in Telugu they call it Tatipa Gandralu, means in the palm leaves, I don't know what they call in Hindi, called Mr. C.P. Brown, who collected all these and then translated them with scholars into English, and the book was published in 1895, and there are 5 books today which are still in preservation. One of them is in Bikaner Museum. Based on that book, in 1938, a silent film was made called Kannappa Nayanar. And then in 1953, one of the greatest Indian actors, legendary Dr. Rajkumar sir in Kannada, made his arangetram in films through this movie called Bedar Kannappa in Kannada. And he acted simultaneously in Telugu. In Telugu, it was called Sri Kalahasti Ishwaram Mahatyam. The same production company from Chennai made the movie in Hindi called Shiva Bhakt in 1954. And then Bedar Kannappa was again remade in 1976 by legendary directors Mr. Babu and Ramana, with another great Telugu actor, Mr. Krishnam Raju, who happens to be the uncle of Prabhas. And then again, Mr. Rajkumar made that movie in Kannada in 1988, where he played the role of Lord Shiva, and his son, Shivraj Kumar sir, played Kannappa. And then after 50 years, I believe in Telugu when we first started, Lord Shiva gave me the permission to tell this generation the story of Kannappa. And when I was writing Kannappa, see, the last 30 minutes is the same. An atheist becomes God's devotee and God decides to test him, and it's a known legend that the linga, blood starts coming from the linga, and Kannappa takes his eye out and gives it to Lord Shiva. This is a single pager. For me it's a half pager. Now, who was Kannappa? What was he? Why was he an atheist? For me, it was an open canvas. For me, the canvas was large. And I'm a huge fan of Lord of the Rings. And I've read the books, watched the movies, I know the dialogues, scene by scene. So for me, I wanted to create my world, and I felt that this is what Kannappa was. This is who he was. This is why he was an atheist. And his love to Lord Shiva. Why is he in love with Lord Shiva towards the end? And why did Lord Shiva actually test him? And what was the relationship between the god and the devotee? And how pure should the devotion mean? See, one thing which I have common with Mr. Akshay Kumar and me is that our devotion to God knows no boundaries.